प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए प्रोसेसिंग पार्ट फर्स्ट का ये लेक्चर ले रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, इन सभी चीज़ों के लिए किन रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता होती है, क्या क्या महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं इस प्रोसेस में, उन सभी का हम एक ओवरव्यू सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम इंडिविजुअली इन सभी भागों की विस्तार में चर्चा करेंगे। DNA replication. DNA basically is the master molecule in organisms which controls all activity including metabolic or genetical is being done by DNA, and DNA replication completes into 3 steps, that is helicase unzips or unwinds the DNA molecule, DNA polymerase brings in new nucleotides, ligase zips the new DNA back together. So why DNA replication is very important? The important idea is that an exact duplication of DNA message is required so that each new cell in the body has the same set of genetic instructions as the cells that preceded it. This also ensures that every new generation of individuals has the same genetic information as his or her parents. So DNA replication is the process, it is basically the copying of DNA. DNA का अपने ही जैसी हूबहू प्रति बनाना, DNA का पुनरावृत्ति या DNA का बहुत मल्टीप्लिकेशन, DNA का रेप्लिकेशन, DNA का डुप्लीकेशन, these all are the same term having the same meaning, that how DNA is copying, how DNA is giving another copy of same to same. So DNA in the process replicates. If it forms DNA, it is DNA replication. If it forms RNA, then it is transcription. DNA carries information that can be used to construct the proteins which form structures and regulate the body's activity. Protein synthesis involves 2 processes, that is transcription and translation. In transcription, the DNA message is converted into an RNA molecule. In translation, the RNA message is used to assemble amino acid into protein chain. So प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो 2 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण जिसको हम अनुलेखन कहते हैं, जिसके अंदर डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है, और दूसरे चरण में मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसे हम अनुवाद कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दैट इज गिवन बाय एफएसटी क्रिक in 1961, it tells that there is universal flow of information from DNA to RNA and RNA to protein. This is what molecular biology's central dogma hypothesis is hypothesized. What it tells, DNA to mRNA, it is called a transcription, and mRNA to protein is called a translation. First, let's learn about RNA. What is RNA? RNA is a nucleic acid called as ribonucleic acid. It has only 1 strand, as DNA has 2. It contains the ribose sugar instead of deoxyribose as in DNA, and it has nitrogen based uracil instead of thymine as in DNA. So DNA is a single stranded structure made up of many ribonucleotides together, that is called as RNA. There are 3 types of RNA that takes part in protein synthesis, that is messenger RNA, ribosomal RNA, transfer RNA. The messenger RNA are the long strands of RNA nucleotides that are formed complementary to 1 strand of DNA. मैसेंजर आरएनए का निर्माण डीएनए की एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर होता है, और वो स्ट्रैंड जो कि सेंस स्ट्रैंड होती है, जिसके ऊपर उसकी कॉपी की जाती है, और वही आगे चल करके प्रोटीन्स का अंदर अमीनो अम्लों का निर्धारण करने का कार्य करता है। राइबोसोमल आरएनए और आरआरएनए दैट इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स to form ribosomes in the cytoplasm,
and ribosomes are the site of protein synthesis. Third, this is transfer RNA. Transfer RNA is the RNA which are smaller segments of RNA nucleotides that transports amino acids from cytoplasm to the protein synthesis site, that is ribosome, and that is adding one by one amino acid in the polypeptide chain. There is comparison between all these three types of RNA, that is messenger RNA, rRNA and tRNA. Messenger RNA carries genetic information from DNA in the nucleus to direct protein synthesis in the cytoplasm, and then rRNA that associates with protein to form the ribosomes, and tRNA transports amino acids to the ribosome from cytoplasm. So these are the three different type of RNAs take parts in the protein synthesis. Now transcription, that is the first step of in the protein synthesis, and transcription is formation of mRNA or production of mRNA from DNA, that is called as mRNA, and this process is called as transcription. In this process, DNA is unzipped in the nucleus, and this is transcription bubble has been produced. We can see here the transcription bubble, DNA का जो जीन जिसकी अनुलेखन होनी होती है वो जीन पूरा खुल जाता है और खुल करके एक बुलबुले का अनुलेखन बुलबुले का निर्माण कर देता है, और इस अनुलेखन बुलबुले के अंदर दो स्ट्रैंड्स होती है। एक जो स्ट्रैंड है वो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाती है और दूसरी स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाती है। टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए की होती है, उस डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर एमआरएनए का निर्माण होता है, और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर प्रेजेंट होने वाले न्यूक्लियोटाइड के आधार पर उनकी कॉपी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा की जाती है और डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर अगर टी है तो उसमें ए बनेगा, या सी है तो वहाँ जी बनेगा, या जी है तो सी बनेगा। मीन्स देयर इज ए कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आर transferred on messenger RNA, so that messenger RNA contains the information from DNA in complementary form, and it is being transferred into cytoplasm where their proteins are synthesized. Then transcription does not happen all the time. We know in organisms some processes happens at one time, another processes are following them. All processes in the cell are not completing or not happening at the same time. There is some regulatory mechanism is there in the organisms, and that is called as operon model has been given to explain regulation of gene in the prokaryotes. Jacob and Monod has given this model, and it operon has the switch to turn on or off transcription. ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को चालू और बंद करने के लिए एक ओपेरन होता है जिसके ऊपर एक स्विच होता है जिसको हम रेगुलेटरी जीन कहते हैं। सो रेगुलेटरी जीन डिसाइड करता है कि कौन से पर्टिकुलर जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना है ताकि वो प्रोटीन बने। पौधे के अंदर जब फ्लावरिंग होनी होती है तो फ्लावरिंग होने के लिए जो जीन जिम्मेदार होते हैं उन जीन का एक्सप्रेशन होता है, और बाकी समय वो जीन साइलेंट रहते हैं। तो रेगुलेटरी जीन ये डिसाइड करता है कि कब फ्लावरिंग होने की आवश्यकता है और फ्लावरिंग के लिए कौन सा प्रोटीन बनने की आवश्यकता है, तो उस प्रोटीन के जीन को वो ऑन कर देता है। दैट इज कॉल्ड एज रेगुलेटरी जीन। सो प्रमोटर डीएनए स्विच दैट प्रमोट्स आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड. Promoter has a site where RNA polymerase enzyme get binded and process of mRNA formation gets started. But if there is no requirement of transcription, then regulatory gene forms some repressor molecule, and that repressor get bind to the promoter site so that RNA polymerase enzyme cannot bind to it, and there will be no transcription. Then third, inducer. Inducer are the molecules which induces the formation of proteins, and here the process of transcription gets started if inducer molecule is added in the mixture, and this inducer get
attached to the repressor, active repressor, and then active repressor becomes deactivate and it cannot bind to promoter site, and RNA synthesis, mRNA synthesis gets started. So it is the operon. Operon is a complex of gene which decides or which regulates the gene synthesis. Changing nucleic acid into amino acids, there is 3 base codon in DNA or mRNA is called as codon, and they are always coded in 3, that is called a triplet. Each triplet corresponds to 1 amino acid. This is where translation begins. So mRNA के ऊपर पाए जाने वाले 3 न्यूक्लियोटाइड का एक पेयर डिसाइड करता है कि उसका अमीनो एसिड कौन सा होगा, और उस अमीनो एसिड की एडिशन के साथ साथ ही प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और ये 3 न्यूक्लियोटाइड का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, इसे हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। बेसिकली translation begins when mRNA binds to the ribosome in the cell. The translation process in which tRNA molecule acts as the interpreter of the mRNA codon sequence. Each tRNA contains an anticodon that is present on mRNA to its anticodon loop, so that it can predict that particular amino acid will get attached to the tRNA and it will be transferred on the ribosomal site. At the middle of the folded strand, there is 3 base coding sequence in the tRNA called as anticodon, and each anticodon is complementary to the codon on the mRNA. Here anticodon table has been codon table has been given, in which there are 64 codons are there, by which the 3 codons are the nonsense codons, and the nonsense codons does not code for any amino acid, whereas 61 codons are the codons which codes for 20 amino acids, one or either. They are coded by 61 codons. So it is the codon table and it is called a genetic code, जिसे हम आनुवंशिक कूट कहते हैं। उसके अंदर 4 बेसिस से मिलाकर के UCAG के एक कॉम्बिनेशन से ये डिफरेंट प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं जो कि 20 अमीनो अम्लों को कोडित करते हैं। When the genetic message is copied to make mRNA, the message contains unwanted base sequences. The junk sequences in eukaryotes are called as introns, and the introns are removed from the message, and the remaining sequences of exons are linked together to produce a sequence of codons that will translate into polypeptide. तो कभी भी यूकैरियोट्स के अंदर इस प्रोसेस के दौरान mRNA की प्रोसेसिंग होती है, तो सबसे पहले जब भी DNA से मैसेंजर RNA का निर्माण होना होता है तो उसके मध्य में पहले एक HNRNA बनता है जिसको हम हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA कहते हैं। और हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA के अंदर एक्सॉन और इंट्रॉन दिखाई देते हैं। एक्सॉन्स आर द कोडिंग सीक्वेंसेज इन DNA, whereas introns are the non coding sequences in DNA. And exons and introns, they are sit together on HNRNA, and at the process of transcription, at the time of processing, HNRNA is converted into messenger RNA, that is finally processed mRNA. And here from the non-coding sequences that are introns, they are get removed and exons are joined together. We can see here the exons are there, introns, then exon, intron. So these all exons have been removed and the exons are again joined together to form finally processed mRNA, and this mRNA will be transported into cytoplasm where there is synthesis of protein. The role of ribosome. Ribosomes are the very important component without membrane structures are there in the cytoplasm, and the ribosomal RNA and proteins combine together to form ribosomal RNA, and ribosomes are the decoding units of the cell, sites of protein synthesis. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण के स्थल होते हैं, तो उसके ऊपर ग्रूव बनी होती है जिसके अंदर आकर के टीआरएनए फिट होता है और उसकी क्लेफ्ट के अंदर एमआरएनए प्रवेश कर जाता है और उस क्लेफ्ट के अंदर उपस्थित एमआरएनए के ऊपर कोडोन के अनुसार टीआरएनए अपने अमीनो अम्लों को लेकर के राइबोसोम की साइड पर आता है और राइबोसोम की साइड पर आकर के इन अमीनो एसिड के जुड़ने से
पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण होता है. So ribosome consists of two major components. One is smaller subunit, another is bigger subunit or larger subunit, which has made up of 50S and 30S in prokaryotes and 60S and 40S in eukaryotes. Ribosomes have binding sites for both tRNA and mRNA molecules and are the main site for protein synthesis. So these are the all basic requirements for the synthesis of protein. That is DNA required, then RNA is required, then then ribosomes are required, and how RNA takes place in the part for the synthesis of proteins. This is all about the basic requirements and the process of transcription, how it completes. We have read some few important aspects of protein synthesis in this first part of the lecture. Later on, we will take another part of lecture by which we can explain the process of transcription and translation. Thank you very much.